Hello everyone, this is Shrestha Mahant, and today I'm here with a beautiful poem, Fog, written by Carl Sandburg. Carl Sandburg is an American poet. He has won three Pulitzer Prizes, two for poetry and one for his biography on Abraham Lincoln. This poem has been taken from your English textbook, First Flight. Dear students, as you know, poems can create deep meaning even with less words. Today we are going to read such poem. This poem has just 21 words, yet it is very enjoyable. But before we start, I have a question for you. Have you seen a cat? How does it walk? It walks silently without making a noise. It sits on its haunches, it watches, and then it moves on. Right? Let's take your attention to altogether a different object. Fog, which becomes visible in winter or rainy season when water droplets gather in atmosphere. Is there anything in common with cat and fog? Well, जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि. Let's go through poet's imagination now. The poet says, the fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. Poet कहते हैं कि जो fog है, fog मतलब धुंध, या इसे हम कोहरा भी कहते हैं. तो ये जो धुंध है ये कैट के फीट की तरह चल के आती है. मतलब जैसे कैट के आने और जाने का हमें पता ही नहीं चलता. क्यों नहीं चलता? क्योंकि कैट बहुत स्लोली और साइलेंटली चलती है. ठीक वैसे ही धुंध भी कैट की तरह चलती हुई आती है. कब आती है कब जाती है पता ही नहीं चलता. यह बैठ जाती है हार्बर और सिटी की ओर देखती हुई. हार्बर यानी बंदरगाह, जहाँ पर शिप्स खड़े होते हैं. जैसे बस स्टैंड पर बसेस खड़ी होती हैं, एयरपोर्ट्स पर एरोप्लेन्स खड़े होते हैं, वैसे ही हार्बर पर शिप्स खड़ी होती हैं. और ये बैठती कैसे है? खामोशी से, घुटनों के बल. हॉन्चेस यानी घुटनों के बल बैठना. ठीक वैसे जैसे कि कैट बैठती है. एंड देन मूव्स ऑन, और उसके बाद चली जाती है. पोएट कहना चाहते हैं कि जिस तरह से कैट खामोशी से आती है, इधर उधर देखती है और चुपचाप चली जाती है, हमें उसके जाने का पता भी नहीं चलता. ठीक वैसे ही फॉग आती है और खामोशी से इधर उधर देखकर घुटनों के बल बैठकर चली जाती है. Now let's see the poetic devices used in the poem. Poetic devices are techniques used by the poet to add effect to the text he is writing. It is used to help the reader create a more detailed image of what is happening with the writing. The first poetic device used in the poem is metaphor. Metaphor means when something is compared to another thing. For example, in this poem, fog is compared to cat. पोएट ने कैट के माध्यम से धुंध को एक्सप्लेन किया. इसे मेटाफर कहते हैं. द सेकेंड पोएटिक डिवाइस इज राइम स्कीम. एज यू सॉ इन द पोएम, देयर इज नो राइम स्कीम फॉलोड. पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, यानी पोएट ने इस पोएम में राइम्स यूज ही नहीं की. इट हैज नो म्यूजिकल सिमिलैरिटी, नो राइम, नो रिदम. The third poetic device is personification. Fog has been personified. For example, poet says, fog comes, it sits. When human traits are given to inanimate objects, it is called personification. Have you heard these phrases? The sun smiled, my heart laughed, the clouds were angry. It is called personification. Poet ने फॉग यानी धुंध के गुणों को मानवीय गुणों की तरह दर्शाया है. जैसे फॉग देखती है, झुकती है, इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. क्या आपने ये शब्द सुने हैं? सूरज मुस्कुराया, दिल खुश हुआ, बादल गुस्सा हुए. इसे personification कहते हैं. Clear? Now let's move ahead towards the
exercise portion of your poem. Your first question from the exercise is, what does Sandberg think the fog is like? And your answer should be, according to Sandberg, the fog is like a cat. Your next question is, how does the fog come? And the answer should be, the fog comes on little cat feet. The third question is, what does it in the third line refer to? And the answer should be, in the third line, it refers to the fog that has covered the city, and it seems as if it is looking over the city like a cat. Your fourth question is, does the poet actually say that the fog is like a cat? Find 3 things that tell us that the fog is like a cat. So the answer should be no. The poet does not actually say that the fog is like a cat. However, he has used cat as a metaphor for describing the fog. नहीं, पोइट सचमुच ये नहीं कहना चाहता कि फॉग कैट की तरह है. हालांकि उसने कैट को एज अ मेटाफर यूज किया है फॉग को डिस्क्राइब करने के लिए. The 3 things that tell us the fog is like a cat are, the first point is, the fog comes on its little cat feet. This means that the fog enters silently just like cat. यानी fog cat की तरह खामोशी से अंदर आती है. The second point is, it sits looking over harbor and city. The fog is compared to cat, as cats also like to sit and look here and there. Fog बैठकर हार्बर और सिटी की तरफ देखती है. तो यहाँ पर फॉग को कैट से कंपेयर किया गया है, क्योंकि कैट्स भी बैठकर यहाँ वहाँ देखना पसंद करती हैं, राइट? The third point is, on silent haunches and then moves on. The fog sits silently over the city, just like the cat that sits on its bended legs. यानी फॉग खामोशी से घुटनों के बल बैठती है और फिर आगे बढ़ जाती है. जैसे कैट अपनी लेग्स को मोड़ कर बैठती है, वैसे ही फॉग भी सिटी के ऊपर खामोशी से बैठती है. So that's all with the exercise portion. I hope you liked the poem. So, see you soon with some another interesting topic. Till then, keep enjoying learning English. Thank you.